We need peace. Without world peace, all kinds of your developmental activities will prove disasters. Basmasura dance. Peace has to be in the center of all the activities. Compassion has to be in the center of all the development activities. And we are now very happy that so many peace-loving people, peace activists, educationists, religious leaders, spiritual leaders from different parts of the world have come here to discuss, to pray, to think, and to plan, to work together to create peace, work together to stop this brutal killing, this ghostly act of killing. We have planned for this 3 days global peace conference. This morning we have the inaugural ceremony at the Mahabodhi campus. Now we have this peace walk in the Leh main market. I'm very happy to see that so many people have gathered. Ma khachani no gata ladaks po jirevia puri jiksteni na mona no te monches po ngatai shkop se borches po ladak sikane ngatai jire I message po chamala cultures po ngata chamne ka khabino ye tenao jin ngeja chamala ki jirevia chamma la straza yani I tuk la shokan la toda con la appreciation chuaza koni last guni nanga khabnente I tuk mala success chuaza chamala tujche jure. He's one personality. He actually taught us at a very young age about the importance of Kakha Ganga in the midst of learning ABC. In the midst of having a Western dress, he taught us the importance of our own dress. In the midst of having fast foods, he taught us about the importance of our own Khala and Baba. And he actually taught us so many things that we actually learn and sing about it, and it has actually become a lesson for our life. Without much my talking, I guess it will be best enough for him to sing and share his feelings with you all. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Kunsal Ladaki. Gen Sangha Sena ji इस बात का awareness रखूँ एक ठंडा एक कामयाना nuclear holocaust लोग जैसे मतलब बम फांसते कि ना लाखों में तबाह सिपाले जिससे मैंने nuclear war बसा माचा नहीं ले जमा मस्जिद दुनिया आराम से तो दोस्तों गाजा में वो स्टोरी एशियट कर ले यूक्रेन ना बम फांस कर ले तेरे पे हमारा ढंसे जो मानो ये वो सिर्फ आगाज नो बहुत सुस्त नो it's just the beginning of Sangha Sena's movement. We have to carry it further. Okay. Yes, this is not just today. He has sowed the seed of anti-nuclear, and I am a supporter of him. I will come next time. Again, we will do things like this, where we will Sangha Sena ji के साथ हम इस बात को international बनाएंगे. ठीक है? आपने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. मेरे बच्ची ने ये समूह ने मुझे इतना मेरा वो किया काले जुले दिन जुले और ये गाना मेरे साथ गाना है आप लोग. ठीक है? और ये गाना मैंने हिरोशिमा में जब मैं हिरोशिमा देखने गया वहीं मैंने कंपोज किया. चिंतन करें आओ मनन करें हम पशु नहीं इंसान बने. चिंतन करें आओ मनन करें हम पशु नहीं इंसान बने. ये वक्त नहीं है युद्ध का ये वक्त है अब बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. शील का लक्ष्य क्या इखलाक का मकसद क्या तुम शील का लक्ष्य क्या इखलाक का मकसद क्या वसुदेव
छोड़ के नफरत प्यार करें, हर जीव का सम्मान करें, पंचशील का पालन करें, हर जीव का हम अणु अणु विध्वंस से बचे, चिंतन करें, आओ मनन करें, हम पशु नहीं बुद्धं धम्मं संघं lives in Japan. In future also, we would want that none of these nuclear weapons to be used because it's not going to create any happiness or anything but disaster. A peace is only found, first a human has to find peace within himself, within herself. Then only we can go in front and talk in front of the others. Isn't it true? First, the peace has to come from yourself, from your home, and then only we can lead and tell our leaders what is peace actually required for. At this point in time, I would like to thank Venerable Bhikkhu Sangasena sir for taking this protest and for saying, from a small place in Ladakh, from top of the Himalayas, and sending the message to all over the world. Thank you so much, sir.
beautiful. कमा अहसन अल्लाह इलैक। ए लोगों, तुम लोगों को इस तरह नेकी करना, अच्छाई करना, पीस, अमन, शांति का पैगाम देना, जिस तरह अल्लाह भगवान और खुदा कुंजुब ने जिस तरह 9 महीना अपने माँ के पेट में तुम्हें खून से हड्डी मुख्तलिफ मराइल से एक बच्चे की शक्ल में निकाल दिया, और आज यहाँ बहुत से शख्सियत यहाँ नामदार मारूफ हैं, तो ये सब भगवान अल्लाह और खुदा कुंजुब ने हमें बचाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह तुम लोगों को नेकी करना, एहसान करना। तो आज देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी में जो है आज से 80 साल पहले जो ये एटम बम के जरिए से कितनी दुनिया में अभी भी जो ये पैदावार है, चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो, कहते हैं कि नाकिस पैदा होते हैं। तो दोबारा इस दुनिया में इस तरह की चीज तकरार न हो, तो हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो लोगों के लिए फायदा पहुंचाए। Kanin jina, ene maus betus pina, kasui jiwa na jide kionte toa, samu tukam borazas. Dili tuspeka mampoji majua, samna sama nalanya teo je sabarale, dili I skaspeka matang ma lada swesya thundeli toa ma skata zambuli na no, jinulbi tujgun soano, kasui chipe nampe thundeli lada sana borazatero. They talk about the Japo, Fichesipika, Nataika, Jabamaji Dula, then it's Sumet Hundelica Domte, Natam Japo Fichespu, Ikadomazate, they are that is a Samala organizing committee choking a petition. Bombing of Hiroshima and Nagasaki. We know that the countless life lost and the survivor who suffered the unimaginable pain. This solemn occasion reminds us of the devastating consequences of a war and urgent need of global peace. We must learn from the history and work together to prevent such atrocities from happening again and again. So let us use this milestone, let us use this platform to reaffirm our commitment to peace, disarmament, and international cooperation. Together we can build a world where nations resolve conflict through dialogue, empathy, and understanding. Each other with tears of a mother have no language. The color of the blood is universal, and that's why we say we are one, we are the world, we are together. We want peace around the world.